Good evening, everyone. Welcome to another special book launch event. My name is Deepti Singh. I will be your host today on behalf of Adhyan Books. I hope कि आप सभी को हमारे नए किताब के ऑथर्स से मिलना, उनको सुनना और उनकी जर्नी समझना इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिए। आज हम जिस किताब को लॉन्च कर रहे हैं उसका नाम है वाटरशेड मैनेजमेंट पॉलिसी प्रैक्टिस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम थोड़ा सा जानेंगे ऑथर के बारे में। आज के ऑथर हैं डी के पॉल। डी के पॉल एक एक्सपीरियंस्ड वाटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं जिनके पास 45 प्लस इयर्स का प्रैक्टिस और पॉलिसी लेवल एक्सपीरियंस है रूरल डेवलपमेंट में। आईआईटी खड़गपुर से डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई अवार्ड मिल चुका है और वो वाटर ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं। उन्होंने आईसीएआर में एडीजी इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट के रूप में काम किया है और हमेशा लो कॉस्ट साइंटिफिक सॉल्यूशंस और फार्मर्स की अपलिफ्टमेंट पर फोकस किया है। अब हम जानेंगे किताब के बारे में। ये किताब एक पिक्टोरियल गाइड है जो बेसिक वाटरशेड मैनेजमेंट और इरिगेशन स्कीम्स को आसान भाषा में समझाती है। इसमें गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स का जिक्र है जिससे बिगिनर्स, वॉलेंटियर्स और एनजीओज को रूरल एरियाज में पानी की समस्या समझने में और सॉल्व करने में आसानी होती है। ये किताब खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सिंपल और लो कॉस्ट मेथड्स सीखना चाहते हैं। बुक में लोकल कम्युनिटीज, फार्मर्स और विलेज ऑर्गेनाइजेशंस को एम्पावर किया गया है और उनकी स्ट्रैटेजीज दी गई हैं जिससे एनवायरनमेंट बचाने के साथ साथ उनकी इनकम भी बढ़े। अवेयरनेस और फील्ड लेवल ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस दी गई है इस बुक में ताकि टेक्नोलॉजी को आसानी से समझा जा सके और ग्राउंड पे इफेक्टिवली अप्लाई किया जा सके। ये किताब उन सब वॉलेंटियर्स, एनजीओज और ऑफिशियल के लिए है जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं। सो नाउ लेट्स वेलकम द ऑथर ऑन द स्टेज। हेलो सर, कैसे हैं आप? बस ठीक है, बोलिए। आई एम वेटिंग फॉर योर इंटरेक्शन। Alright. So firstly, I would like to congratulate sir. आपकी बुक आज लॉन्च हो रही है और ये अमेजन पर अवेलेबल है एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। लेट्स मूव अहेड एंड हम बात करते हैं आपकी किताब के बारे में। उस किताब में क्या चीजें आपने लिखी हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि आपकी किताब की जर्नी कैसी रही। यस, थैंक यू। सो सर, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इनिशियली आपका एक्सपीरियंस और आपने ये बुक जो लिखी है उसका बेसिस क्या है? हाँ, जरूर। थोड़ा सा मैं बताऊंगा। आपने बहुत सारे कुछ बता दिया। मैं ये बताऊंगा। आई वॉज born in Calcutta in 1947. Then I studied in Ramakrishna Mission. Then IIT Kharagpur. Then joined ICAR as a scientist. Then I gradually researched on irrigated and unirrigated areas in many institutes, CRRI Qatar. Then Hazaribagh established a new research station at Hazaribagh, upland rice research station, because rice is grown in upland area where the most of the poor people live in 5 continents, including India, Australia, Africa, North America, etc. Then I retired as a assistant director general, looked after the university's coordinated research projects. In between, I joined Ministry of Agriculture as additional commissioner, top technical advisor, or executive in the Ministry of Agriculture, Rain-fed farming system division at Krishi Bhavan. There I worked 8 years, and the National Watershed Development Project for Rain-fed area was launched in my time, 92 to 98. 6 plan period, 7 plan period, and 8 plan period also I looked after, prepared the expenditure finance committee memos, prepared the project for the all 29 states and 8 union territories, monitored it, and saw that technically feasible grassroots level low cost technology is pushed
because we have got a lot of resources, rain, water, people, but the management is missing because we are doing traditional agriculture, but the population growth, land degradation, climate change has made it the soil water problem, management of the livelihood as a problem. So this watershed management throughout India, the remote areas where the rainfed areas less than irrigated 30%. So those areas are covered in my book. So those I have worked as a development researcher, developing that technology, low cost vegetative and mechanical technology, and the production systems, as well as the implication of adoption, the strategical adoption. पॉलिसी बनाने से नहीं होता है, उसका adoption के लिए टाइम लगता है. Those things I have learned. Then I retired, I started a watershed association for rainfed areas, uh, training, employment, resource utilization, Water India, waterindian.com, my website. There I worked and I did this implemented four watershed management project funded by the Department of Land Resources, Ministry of Rural Development. Also, later on, I took the World Bank project, the accelerated development of minor irrigation in West Bengal 7 districts. So this experience led me my first-hand knowledge, led me the grassroots reality. So I thought to write this book. This is my experience, and now we are given a lots of questions, and I can give a specific answer to that. Thank you so much. All right. So looking at the experience that you have, I hope that this book is completely raw in terms of the experiences that you have taken, and it will be too much related to ground level realities. And then accordingly, you have written this book with all the experiences that you had in your life of 45 years of experience. And I think this book is going to be a great book for the people who are into the same watershed management and everything. So my first question is somewhere related to the same, that सर आपका इस बुक को लिखने के पीछे मोटिवेशन क्या था? What was that core motivation that you got before writing this book on watershed management specifically? मोटिवेशन तो ये था, मैंने काम किया, मैंने जो डॉक्यूमेंट किया, जो मैंने फील्ड लेवल में देखा, मैंने जो मिनिस्ट्री टॉप लेवल में देखा और रिसर्चर, तो मैंने सोचा दोस्त जो क्या प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, देन प्रॉपर पॉलिसी लेवल डेवलपमेंट एंड ग्रास रूट इम्प्लीमेंटल, अलग अलग स्टेज में अलग अलग वर्कर करते हैं. तो synchronization or what is that called harmonious transfer of technology or the management practice वो नहीं पता. जो गाइडलाइन बनाते हैं उनको लिमिटेड नॉलेज रहता है, और जो ग्रास रूट लेवल में वो सोचते हैं मेरा गाइडलाइन बहुत टफ है, ये हमारा ये काम नहीं करेगा. जहाँ पे रेनफेड एरिया, हमारा देश में बहुत सारे क्लाइमेट कंडीशन है, हेटेरोजेनियस सिचुएशन है. तो मेरे को बोला इसलिए लगा स्पेशली दिस बुक इज फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक, जहाँ रेनफॉल 500 to 1100 सेंटीमीटर मिलीमीटर है. सो दो एरिया में लोग सोचते हैं पानी तो खूब बरसता है, ड्राउट क्यों होता है. सो ऑल दिस प्रॉब्लम, हाउ व्हाई द रेन कम्स फॉर 3 months or 4 months, but the agriculture or livelihood is for 12 months. How to store? And बरसात में इतना पानी आता है, फ्लड हो जाता है, उसके बाद ही शुरू हो जाता है ड्राउट. हाउ टू स्टॉप दिस? सो वाटरशेड मैनेजमेंट मैंने काम किया, डेवलप किया. सो आई वांटेड टू पॉपुलराइज इट सो दैट आवर कंट्री बिकम a self-sufficient like other countries, New Zealand or Canada, Germany, where my children are staying and settled. I have seen that. So those have motivated me that why we cannot do that. Why in New Zealand, how they are keeping all this water in the reservoirs. उसके चारों तरफ वो लोगों ने हेरिटेज साइट्स, रिजोर्ट, होटल्स, इंडस्ट्री बोर्ड बना दिया, एंड उसमें बहुत सारे सैल्मॉन्स व बहुत सारे फिश करते हैं. दे आर गेटिंग एक्सपोर्ट and agriculture. They are doing all sorts of cattle
रियरिंग कर रहे हैं एंड वो एक्सपोर्ट करके पैसा कमाता है. हमारा देश में जमीन है, आदमी है, तो लैंड सिचुएशन छोटा छोटा है, फिर भी टेक्नोलॉजी करके कर सकते हैं. तो these are the motivation for me writing this book, so that the the last man in the village who has got small land and have no resources, how he can manage his things and livelihood through watershed management, through community participation. This is my ultimate motivation. Understood, sir. And that's a great thought that we are planning to do something great and bigger in terms of the rainwater that is being, I think, is being just wasted every year. And for coming years, I think people like you, if they tell us how to use that water which is being wasted, it could then be utilized. Till then, it is just a waste of water, I think. And we are facing a It's lot of not only issues. water. It's not only water. It is also the land. We Yes, generally people take care of his individual land. जमीन जो correct. होता है तीन किस्म का है, रायती, जो खास महल या फॉरेस्ट. फॉरेस्ट एरिया में वो फॉरेस्ट छोड़ देते हैं, बरसात होता है, वो पूरा पानी आ जाता है. पहले फॉरेस्ट में प्रॉब्लम होता नहीं था, बहुत सारा पेड़ वेड़ था, लेकिन फॉरेस्ट के चारों तरफ आबादी हो गया, जंगल का सफाई हो रहा, तो उसके चारों तरफ बहुत लैंड डिग्रेडेशन, इट्स अ बिग प्रॉब्लम. और खेती बाड़ी भी एक इंडिविजुअल अपना खेत देखता है, लेकिन पानी जो है सब खेत में आता है, ऊपर वाला का पानी नीचे आ जाएगा, उनको खेत तोड़ते हुए निकल जाएगा. अगर सब मिल के नहीं लिया, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और विलेज वाइज प्लान एंड देन वाटरशेड बेस्ड प्लान अगर नहीं करेगा, तो द लैंड डिग्रेडेशन विल बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम. यस सर, डेफिनेटली. मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. सो बुक के इनिशियल चैप्टर्स में आपने पॉलिसी, गाइडलाइंस और कुछ ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशंस के बीच में रिलेशन एक्सप्लेन किया है. वो आपने वो रिलेशन कैसे एक्सप्लेन किया है सर? मैंने चैप्टर 2 में जो हमारा है उसमें दिखाया है गाइडलाइंस एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी. Actually, watershed management is the management of the land and water in individual soil as well in the village. तो हमारा देश का वाटर रिसोर्सेस द 20 बड़े बड़े नदी है, 16 हिमालयन रिवर्स, 4 नॉन हिमालयन, जैसे ताप्ती, गोदावरी, कावेरी, ये जो है नॉन हिमालयन रिजर. बाकी 16 हिमालयन रिजर, दे हिमालयन जो बिग रिवर सिस्टम जैसे गैंजेस, ब्रह्मपुत्र, and except Narmada. Narmada is coming from the Amarkantak area. So those rivers are flowing, and these snow melt in the rainy season, in the summer and rainy season. Plus rainy season rainfall is going there. तो इस रिवर्स में से इरिगेशन तो डेवलप हुआ, बट इरिगेशन इज मोस्ट वेरी कॉस्टली. इट कॉस्ट अबाउट 4 to 5 lakhs rupees per hectare. हमारा सरकार, हमारे पास उतना पानी पैसा नहीं है, और इरिगेशन से दे हैव डेवलप्ड अबाउट 40 to 70% तक, कहीं कहीं 70% तक कवरेज हुआ. फिर भी लार्ज रेनफेड एरिया जहाँ कोई बरसात होता है लेकिन पानी रोकने का, पानी मैनेजमेंट का साधन नहीं है, वहाँ पे ही वाटरशेड मैनेजमेंट किया जाता है. इट्स ए अम्ब्रेला प्रोग्राम. वाटरशेड मैनेजमेंट is a geohydrological unit where different land situation contribute water to a single river basin, single stream. The small stream, गांव में जो नाला है, नदी है, उसमें पानी चारों तरफ से सबका खेत से आता है. अगर वहां पे कहीं एक बांध बांधा दिया जाए तो सब गांव का पानी उस बांध से निकलेगा. तो दैट इज वाटरशेड मैनेजमेंट. जहाँ पे कंट्रीब्यूट होता है, दैट एरियाज आर द वाटरशेड एरिया. सो जैसा ये गांव का है, वैसे ही अगर 10 गांव के मिल में एक छोटा रिवर लेट है, तो वहां पे 10 गांव का पानी आता है. सिमिलरली यहाँ से जाके एक बड़ा नदी में चला जाता है. ऐसे करके जैसे गैंजेस, इस अपर गैंजेस में जमुना का पानी, फिर ये बहुत सारे का पानी है. जो लोअर गैंजेस में कोशी, ये फिर भागीरथी, ये सब का हमारा छोटे छोटे गंडक के पानी के आते हैं. So rivers, जो watershed है, that is a big basin, water Ganges basin, उसमें छोटे छोटे watershed होते हैं, more than 2000 hectare.
ये वाटरशेड मैनेजमेंट करके हमारा यहाँ जो जहाँ पे हर गांव में हर जहाँ पे इरिगेशन नहीं है वहाँ पे पानी को रोको, खेत में रोको, नाली में रोको, तालाब में रोको, वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाओ। इसका बनने के बाद जो एक्सेस पानी होगा वो बाहर चला जाएगा। उसको भी अगर रिजर्व में जैसे चाइना में है, दे मेक एट द लास्ट पॉइंट द बिग रिजर्व जहाँ पे दे मेक टूरिज्म, वहाँ पे टेंट्स लगाते हैं, फिशरी करते हैं, टूरिज्म करते हैं। आई हैव सीन इन चाइना, आई हैव विजिटेड मेनी टाइम्स ऑन वाटरशेड मैनेजमेंट वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम में। So those things I wanted to and introduce, and that was introduced in National Watershed Project, Renfed area. मैक्सिमम पानी हमारा खेत में, पानी में खेत का मेड़ है उसको 6 इंची होता है, उसको 10-12 इंच काट देने से बहुत सारे पानी रुक जाएगा। बहुत सारे एरिया जहाँ मेड़ नहीं बनाते हैं, पानी बरसात का पानी ऐसे ही बह जाता है। दैट इज then making different type of structure is necessary. That has been introduced in my methodology. There I have given the policy guidelines as given by the government of India, watershed management. There are lots of management program, DD, drought fund area program, desert development program, river valley projects, national watershed management project. These things started in 1976, then went up to 1995. Then unified watershed management was taken up by Department of Rural Development. That is called Integrated Watershed Management Project. They have given different guidelines, which has taken all these things, which has been explained in my book. And these guidelines takes care of how to start, mobilize the people, empower the people, give them training, then how to take up the work, what will be the type of structures, what type of expenditure is there. These guidelines explains all these details because there is limitation. Government of India gives 12,000 rupees per hectare. सो उसी में आपको खर्चा करना पड़ा। आपको मान लो 500 हेक्टेयर है, सो आपको 60 लाख दिया जाता है, उसमें 10% इज योर मैनेजमेंट कॉस्ट। बाकी आपको अबाउट 65% इज द नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में से तालाब बनाओ, चेक डैम बनाओ या नाली बनाओ, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाओ, ये सब उससे में। और बाकी ट्रेनिंग 10% है और production system about 9% high, integrated watershed. How to calculate this in this watershed management? There are 20 villages. So how to divide this? These are the management techniques I have explained there. How can do it? So this in chapter 2, and in most of the chapter overlapping भी है, क्योंकि you have to take back reference just like this natural resource management. How to do this? What are the things? Rainfed area system. All these I have explained with the help of pictures and enumeration. ऑल राइट सर, ग्रेट इंसाइट अबाउट दैट। हम मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि जो आपकी बुक है वो इस कॉम्प्लेक्स वाटरशेड कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई कैसे कर रहा है उनके लिए जो बिगिनर्स हैं, जो इस चीज को शुरू करना चाहते हैं, या फिर जो एनजीओज हैं जो हेल्प करना चाहते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट में। बिगिनर्स में ज़्यादातर जो watershed management is mostly have got implication for the farmers or the villagers they staying there. So farmers and villagers are mostly unorganized. लेकिन आजकल watershed management होने के बाद there are lots of small NGOs, but soil and water management experience NGOs are very few. Most of the NGOs आजकल generally literacy, awareness या मेडिकल लाइन इसमें रहते हैं। सॉइल एंड वाटर और एग्रीकल्चर इस लाइन में बिकॉज इट इज डिफिकल्ट एंड हार्ड वर्क एंड फील्ड लेवल वर्क, देयर आर वेरी फ्यू। So my idea is to in this book writing is that there is a lot of scope, lot of unemployed boys are there in villages. If you can organize them and if you can make the village level people understand that watershed management करके भी हमारा livelihood plus देश सेवा
प्लस विलेज का डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, लैंड डेवलपमेंट, सॉइल एंड वाटर डेवलपमेंट, एज वेल एंड ये तो कंजर्वेशन स्ट्रक्चर हो गया। प्रोडक्शन स्ट्रक्चर में क्या, डिफरेंट क्रॉपिंग सिस्टम्स, फार्मिंग सिस्टम मतलब एग्रीकल्चर, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, horticulture, sericulture, then your medicinal plant, then tribal medicine, because all these can be developed, and this way lot of employment can be generated and our natural resources can be properly utilized, which are getting wasted. So this watershed management में हमने ये explain किया how these NGOs, they can take benefit of the, like the NGOs in our West Bengal tribal areas. That is, they are tribal, being a tribal area, there the use of fertilizer and insecticide is less. So these areas are suitable for organic or natural farming. If you can increase, and lot of, I have seen, I have introduced lot of groups which is called self-help groups, just like सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर दैट, जैसे हमारा वो ट्राइबल लेडीज लोग मुर्गी या बकरी पालना चाहते हैं, थ्रू वाटरशेड मैनेजमेंट वी गिव वन टाइम असिस्टेंस ऑफ 25,000, एक बकरी दिया जाता है उनको, फूट कर दिया जाता है उनको, और वो एज ए लोन, एंड उसको बिना इंटरेस्ट उसको लिया जाता है, उनको 1 साल 2 साल हैंड होल्डिंग करता है, हाउ टू रियर इट, पोल्ट्री, पिगरी, फिशरी, मशरूम, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है ऑन हैंड्स, माने कैसे करना है। हमारा जो वाटरशेड डेवलपमेंट टीम एक्सपर्ट्स होते हैं, इंजीनियरिंग, सोशल सर्विस, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, प्लस सेरिकल्चर एक्सपर्ट्स होते हैं, दे गो, उनका साथ बताते हैं ऐसा करो, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, जैसा स्पेसिफिक ट्रेनिंग मशरूम प्रोडक्शन, सो व्हाट टाइप ऑफ मशरूम लेना है, स्पॉन कहाँ मिलेगा, उसको ग्रो करने का टाइम, टेम्परेचर क्या होगा, कहाँ पे आपका घर में कैसा है, वी विजिट देयर, वी डू इट, एंड हैंड्स ऑन ट्रेनिंग से स्लोली स्लोली डेवलप होता है। ये सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं, जैसे हम लोग जनरली दिल्ली वगैरह में एक बड़ा म्यूजियम ऑडिटोरियम ले लिया, लेक्चर दे दिया, सब चले गए, वैसा नहीं। वाटरशेड मैनेजमेंट में यू हैव टू गो इन द फील्ड, गेट इट डन, and we have to get a report, because your fund and finance is directly controlled on your monthly project report. Your fund will be released. Suppose I have prepared the detailed project report that there are 30 village, will make 40 water harvesting structure. So every month you will say how many water harvesting structure you have done. So all these things are monitored by the district level authority, that is called project manager, which is the soil conservation department people, and then they are also monitored by the state level national agency, just like in our case watershed development agency for watershed development for West Bengal state watershed development agency, वो लोग मॉनिटर करते हैं। हमारा रिपोर्ट DOLR में जाता है, डायरेक्टली नहीं, क्योंकि देयर आर lots of micro watershed, there's 177 in West Bengal, our was 4 projects, so everybody report. So this way we carry on, and this process is explained here, आपको क्या करना है एज ए स्मॉल एनजीओ, आपको आपका बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपका एरिया कितना पानी है, लिटरेसी लेवल क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग कौन कौन स्ट्रक्चर्स आपका है, उसको कैसे डेवलप है, लोगों से मिल के करना है, all these details. So including the development of these NGOs capacity, how the NGO, those who are interested, they can go to the nearby area and know. So this way, watershed management is beneficial to all these concerned people, and especially for NGOs. Farmers को तो benefit होगा ही, because it is done in this field. All these work are done in the farmer's field. Water structure, demonstration of different improved rice variety, or multiplication of fisheries,
or development of fishery culture, complex complex fishery culture, or horticulture development, all are done in farmers' place. So farmers also trained, and the I have been a national NGO. There are smaller NGOs in the villages. Those are called self-help groups, water groups, or the village level associations. They get involved. We give them work, like you organize the people into groups, and they get some honorarium and all as volunteers, so that because we don't employ a lot of people, but there are a lot of work has to be done. We give it on voluntary basis mostly, and only some of the remuneration, like there is a secretary in the watershed committee, the field level on the सातों दासों विलेज का एक आदमी होता है जो हर गांव का आदमी मिलके एक कमिटी बनता है, watershed committee, then micro watershed committee. Those people decide हमारे यहाँ कहाँ पे तालाब बनेगा, कहाँ पे हॉट करेगा, किसको मुर्गी दिया जाएगा, किसको they give us. So that is documented and make into a detailed project report at the beginning of the watershed management. So the farmers or the village, the NGOs, they get involved. ऑल राइट सर, ग्रेट इंसाइट अबाउट दैट. मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. सो वी हैव सीन मैनी रूरल एरियाज, उनको एक चैलेंज आता है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में. तो इस बुक में क्या हमने इस चैलेंज को मेंशन किया है, क्या हमने उस को एड्रेस किया है, उसके लिए कोई रेजोल्यूशंस लिखे हैं? हाँ, मेरा इसमें 7 चैप्टर है, मैंने स्पेसिफिक चैप्टर. आई हैव सेड दैट द इंट्रोडक्शन टू वाटरशेड मैनेजमेंट, दैट इज अबाउट वाटरशेड मैनेजमेंट क्या है, द प्लानिंग प्रोसेस एंड मेथोडोलॉजी. वाटरशेड मैनेजमेंट को करने के लिए क्या क्या प्लानिंग प्रोसेस है एज पर द गाइडलाइंस, उसका क्या मेथोडोलॉजी है, दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन चैप्टर 2, पेज नंबर 18. Then third chapter is natural resource management. And the natural resources are soil, water, plant, animals, and people in any habitation, in any village, in our areas, rain-fed areas, wherever it is possible, rain-fed. These are the natural resource. Management of all these resources are called integrated watershed management under this watershed management, because watershed management is an umbrella program where the all lands, all people, all types of plantation, all types of horticulture or these are taken care, and remedial measure is taken for the degraded or unfertile or degraded or landslide areas, so that the soil water plant can be utilized for proper benefit of the people living over there, for their upliftment of the social status, economic employment, and livelihood development. Under this watershed management, in my this chapter at page number 53, I have given a proper documentation how the mechanical structures like the land are different slope depending upon the topography, situation, as well as its rainfall pattern. The different types of conservation measures, which are called land development. Land development. So these conservation measures are taken. Mostly mechanical measures are popular. Is like check dam, then your side seal detention dam, then your water harvesting structure. These are, but without much knowledge about the utilization of the water. Conservation, earlier soil conservation was only soil conservation, but they did not have a backward knowledge. Watershed management has forward and backward. What is existing, what I aim, that is backward. If I make a water harvesting structure, it is meant for the people
or this 1 hectare water harvesting structure should be utilized by 10 to 15 farmers, those who are having land beside that. That is meant for that. So this managing this water harvesting structure needs proper planning and proper um, uh, implementation, for which this documentation has been given in my book. And mechanical structures are degrading by few years. But if the vegetative structures are done, like contour vegetative bund, the contour bunds are there in unirrigated and slopy area. There are long bounds are there. So there, if it is not vegetated, so in a flash flood, in a very heavy storm, these bunds generally get degraded, are broken, they get eroded. So some type of vegetation is planted that, so that is called vegetative structures. In the field also, even higher up areas and all, they are in the terrace land. If you on the end of the terrace, if you put some plant, so the terrace bund did not get breached. So this vegetative and mechanical structure, which I have emphasized and given proper guidance in this book, this Natural Resource Management, Chapter 53. So here soil, water. For water, I have given another chapter, chapter number 4, rainfed farming systems and rainwater management. So they are specific water harvesting management. Rainwater management involves two things: safe disposal of rainwater so that it does not erode the soil, and safe storage of rainwater which can be used as water harvesting structure. These two things have been explained properly, because people think that rainwater management is that, but rainwater management is water harvesting structure. One structure, not a series of structure. What is the water yield? What is your, how much water you are getting? That is the water yield. That is generally found by rational theory. That is Q is equal to A into rainfall into intensity and duration. So suppose you have got 1 hectare area and your rainfall is 10 centimeter, that is 0.1 meter. So you will have uh, one 1 hectare is 10,000 meters. We will get 10,000 into zero point 0.1, that is 100 cubic meter, 1,000 cubic meter rain will be stored. This is the water in your 1 hectare if 10 centimeter. Now this water does not stay, it will go from upper area to lower area due to its gravitational force. So how to keep it there? That is what has been on its way. We have to make a conservation structure, mostly dug out ponds or the natural depressions are dug out, and maximum water is tried to be kept. That is called natural resource of water. Then the plant resources. Now, indiscriminate grazing in the rainfed area. Everybody has got the cows and the bullocks and the little woods after rainy season. So they cut everything. So how to preserve the rainfed area, how to preserve your develop grassland, how the common land can be utilized into grassland, forest areas can be converted into a properly managed area where indiscriminate and deforestation do not take place. Make them wise, and how the rainwater coming forest area can be developed safely to our, because the forest is generally in the upper area, then the people's field, then there's the lower area. And see, watershed management is very important for uh, all the river basins, because all the river basins get water from the rainfed area. जितना पानी होता है सब इसी से जाता है, वाटरशेड एरिया से जाता है, लेकिन वहां रोकने का नहीं है, वो नीचे जाके चला जाता है। और ये जाने का रफ्तार को बोलते हैं कंसंट्रेशन टाइम। जो पानी पहले नदी नाला में जाने में 10 दिन लेता था बरसात होने से ऊपर एरिया में, क्योंकि
घना जंगल था, तो उसके बाद खेत था, उसके बाद लोगों को ये था खेत होने, लेकिन अभी वो घना जंगल घट गया और पेड़ पौधे कम काट हो गया, तो ये पानी बहुत जल्दी नदी से होते हुए नीचे चला, कंसंट्रेशन टाइम इज रिड्यूस। ये कैसे इम्प्रूव किया जाए? तो आपको सीरीज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन प्लान्स, soil conservation, check dams, water harvestation, these are planned. This is called natural resource management. And इसको कौन करेगा? People are there. So those people has to be trained. So this training program, hands on use, उनके साथ काम करो, ये सब वाटरशेड मैनेजमेंट में किया जाता है, और वहाँ पे लोकल लोगों से ये सब काम कराया जाता है, जिसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो तालाब खोदेगा वही खोदेगा, जिनका एरिया है उस एरिया में उनको वेजेस दिया जाएगा, गवर्नमेंट वेजेस, लेकिन वही लोग खोजेगा, उनको लाइवलीहुड भी होगा। दे विल लर्न हाउ टू मेक द वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि हम तो एक दो बनाएंगे वाटरशेड। एक ब्लॉक में करीब 24,000 हेक्टेयर जमीन होता है, और वाटरशेड 500 हेक्टेयर है। so these are meant as a model. See, this model आदमी देख के ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, साइट विजिट करके ये सब किया जाता है। ऑल दीज थिंग्स कैन बी, so this has been explained in my natural resource management chapter as well as other chapter, crop production chapter, madam. ऑल राइट सर, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप मुझे कोई ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हैं जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग से किसी कम्युनिटी में बहुत बड़ा चेंज आया हो? हाँ, मैंने as a developmental additional commissioner, I have visited all the state, all seen, but that's cursory visit for monitoring and all. But while I was president of water, I was the PIA, Project Implementing Agency. PIA होने का मतलब है you have to take all decisions, all accounting, everything, fund and finance, everything stuff. You have to do all your under your signature. It is done. You have to be always busy there. You have to see क्या जैसे ट्रेनिंग हुआ, कितना आदमी आया, कितना ट्रेनिंग ट्रेनर आया, उनको रेम्यूनरेशन कितना दिया, सर्टिफिकेट बनेगा, उसको वाउचर बनेगा, आपको साइन होगा तब पैसा मिलेगा। सो द PIAs आर द मेन पर्सन हु डज दिस। आई वाज PIA ऑफ IWMP 04 Ilam Bazar Watershed Development Project in Birbhum, as well as other 4 projects in Bengal, West Bengal, and Midnapur districts. That is in tribal area where Naxalism was the dominant up to 2009 and 10. When we went there, the government never wanted to go there because they were anti-government and there were a lot of shootouts. So we NGOs were given these 4 projects in those areas. So we are, and we being a non-governmental organization, we approached them, we told them we have come, we arranged, I have given the photographs in chapter 1, chapter 2, the large number of people, we have awareness development. For 3-4 months we did awareness development. It was very difficult to reach the villages because the roads are cut so that the government vehicle to do, but we managed with our vehicle and all. So all these areas are extremist left dominated areas. Being an NGO, we are given this because allocation is done by the district, yes, soil conservation department at the state level. They take the better where it is easy to do. So they have given to their people assistant director, director of agriculture. But NGOs we have given this. So I will explain one project, Kakri Jharna. No, I will say in this book the project on watershed management aspect. This watershed management in Ilam Bazar project was explained here. There, the population is about 80%.
tribal and SC, and um, the total population is 46,554, and the literacy rate is very less. And these village, there are 39 villages. This the actual though the rainfall was good, but the actual productivity was very less, and this has lot of degraded land. In this watershed management project, we have first organized awareness camp. Then we identified one problem in each village. That is called entry point activity. Entry point. So that the rapport between the villagers and the NGO, who is the implementing NG, can be developed so that they can work with our guidance in future. That is called entry point activity. Like in many villages, the main problem was that the rainy season, the roads become drained and they cannot go because there are lots of canal and water flood. It floods and there is no way, no culvert, nothing. This is the common problem in all the villages. Then there is the problem in the village schools. There is no benches. Schools are running, the boys and girls are sitting on the floor, they bring their own cushion and all. Then there are certain these things that drinking water problem. Tribal area mostly they don't have drinking water, they take the open well. These open wells get inundated during rainy season. It gets contaminated, and there is a lot of disease. So all these three, four problem we identified, and every village is given this. They said while along with the villagers, we made culverts, made this thing, and the retaining wall so that the roads become proper in rainy season. This has improved the communication systems, and the villagers are grateful. And that is been done in 10 villages. Then the drinking water problem was in 11 villages where we have dug out this. We put ring wells, wide diameter, 8 feet diameter ring wells with hand pump, and also with a ladies changing room. And many of the places we there is a specific problem with the women. They don't have a bathing place. They have a open पुखर, दैट इज तालाब, लेकिन नहाने का दिक्कत होता है. सो वहाँ पे हम लोगों ने स्टेयर केस बनाया, तो उतारने में बहुत से लोग गिर गया, हाथ पैर टूट गया. सो वी मेड द स्टेयर so that this bathing ghat and ladies changing room, and in 8 villages we made. So this way we developed the rapport, and then we went for the training and identification of the types of conservation measures, कहाँ पे कौन काम होगा conservation. And ये this has improved the in there are 39 villages. All there are three micro watersheds, 22 village, and seven village in Gurisha, 22 in Balrampur, and 11 in Shiksha. There are three watershed committees run by two watershed members, the representative of the village, self-help groups, panchayat are there. So all these things are there. We have started the work, and 2 years we have done lots of work, and there are 47 water harvesting structure, out of which 15 new water harvesting structure has developed. The agriculture productivity has improved by 19% over an area of 473 hectares. Then income has not much improved because the price of agriculture produce is not so much. Like tomato होता है, जब ज़्यादा होता है तो उसका दाम घट जाता है. प्रोडक्शन हो रहा है, कम है तो दाम ज़्यादा होता तो ये. But fisheries, there has been a dominant progress.
We have multiplied in all the out of 47 water harvesting structure, there are about 30 they are doing composite fisheries. That means rohu, mirgla, and katla composite. Even common carp and grass carp are also taken, and they were harvesting earlier very fast. We told them, don't take these fingerlings small, grow it. Now they are growing up to 1 year and taking the fish about 1.5 kg. So the income, those who have done, their income has improved by from 300 to 400%. Those who are doing fishery and fishery commanded. Animal husbandry, poultry, piggery, there has been lot of good. But since this there is a limitation of fund and all these things, so some development has been there, and appreciable development can be done if it is continued by the farmers, what we have said, if it is sustained. So this watershed management is explained in chapter number 2, also in chapter 4, drought water harvesting structure systems. I have explained properly. That is in Gurisha and West Bengal, IWMP, Department of Land Resources funded project monitored by State Watershed Development Agency, West Bengal, and implemented by Water, where I was the president, and I have worked for 2011 to 2020. 9 years I slugged there. I used to go 10, 15 days in a month, spend a lot of money, stay in a our office. I made a room, guest room. So I had a personal knowledge, and being since I was retired, so I could give time, and my maintenance was not a problem. So I did, and I documented this, made photographs, and some of them are shown here, madam. That's great, sir. And looking at the initiative that you took and it turned out successful is a great thing. Also, आपने जो experience life में gain किया, the field experiences that you had, वहाँ से क्या better possibilities हो सकती थी इस watershed management, natural resource management में जो आप चीजें और better कर सकते थे, आपने वो अपने experience से साथ में लगाकर फिर इस बुक में हमें लिख कर दिया है। आई थिंक इन द कमिंग फ्यूचर बहुत से लोग जो इस मे बी इस लाइन में करियर ग्रो करना चाहते हो या फिर इन चीजों में अपने आप को देख रहे हो, तो उनके लिए ये बहुत ईजी है आपकी बुक को पढ़ना, उससे समझना कि इन चीजों को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. So it's a great Right. book, and I would highly suggest the audience to go and purchase the book from Amazon and just go through it and read this book. It'll be a lot helpful for you. And I would like to thank you, sir, for joining the event. And it was great interacting with you. In the end, would you like to say two lines to the audience? Yeah, I like to stay. This is a um, what is that called? Process development for developing our rain-fed area. Right from the minister in the ministry in land resource and Ministry of Rural Development, they give guidelines and the fund. The lot of problems are there that I have documented what they can some correction or can be done. Then since it is a three-stage project, central funds monitoring, state fund use, monitoring and report back and implementation. Then the PIA, district level and the provincial. District level people, they monitor in their district, like in Midnapur, there are 16 projects, project manager, the soil conservation officer. Being a soil conservation officer, he is mostly soil conservation oriented. He is very particular about the water harvesting structure. It should have a circular, it cannot be circular, it will be a square, all these. That they have a that back knowledge, soil conservation. But the farmers and the field, it is ultimately it will hold water. Whether it is circular or it is टेढ़ा मेढ़ा हो, अगर कम पैसा में अगर करे, is obstruction. But that has also been I have documented that
you must not be very technical person while you go for the grassroots level. You have to adjust location. जहाँ पे आपका किसान का आप सरकारी पैसा पे हो रहा है तो यू कैन डू इट, बट आपका एम है, आप इसको दिखाना है। ये वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर करने से आपको तालाब में पानी रुकेगा, आपको लोग वहाँ नहा सकेंगे, आपको चारों तरफ पेड़ पौधे में पानी पहुंचेगा साफ सरफेस से, आपको वहां पे मछली पालेगा, आपको गाय को पानी दे सकेंगे। चाहे थोड़ा सा छोटा सा भी बनाओ, हमारा ये है। लेकिन वो टेक्निकलिटीज में फंस जाता है, कितना पानी आएगा, कितना पानी जाएगा, कहाँ लगाएंगे, वो सब छोड़ो, तुम बनाओ, इतना पैसा में ही करो। सो दिस आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट आप वेजिटेटिव करो, तालाब बनाओ, पानी रोको, आप प्रोडक्शन सिस्टम में प्रॉपर कौन वैरायटी राइस लोगे, कौन वैरायटी का केला लगाओगे, आपका तालाब बनाया है उसको मेड़ पे कुछ पेड़ लगा दो, कुछ वेजिटेबल लगा दो, कुछ फूल लगा दो, आपका कुछ मुर्गी रखो, इसका ट्राइबल पीपुल दे डू कैटल and the farming system, goats and sewer, the swine they keep. So how to use the excreta? Make it is a composite. मैं उसको डायरेक्ट पानी में नहीं देना, थोड़ा कंपोस्टिंग करके पानी में दो, इट बिकम फिश फीड, तो आपका मछली बढ़ेगा। ऑल दिस सिस्टम हैज बीन एक्सप्लेन्ड एंड दिस book is a practical guidance where it bridges the grassroots documentation. Many of the watershed management book, being a scientist, I have written books and all. Then many of my scientists have written books, but mostly they do not give importance to the watershed management at grassroots level from people's or small NGO perspective. That I have tried to give importance here, and I have tried to justify it with the uh, documented uh, business ventures in chapter number 7. In watershed management you can do for um, goat cultivation, goat khargos, sugar, bananas or horticulture, all these things you can take up and successful business, and you can make SME, and government is giving fund nowadays for MSME, for small scale, so you can get fund. Those we have also tried, and in our all these 4 projects, about 11 people has taken up this business: poultry, piggery, mushroom, horticulture, and 7 on fisheries. And they supply organic fish to Calcutta. So all these things, if you do this, you can do this. I request my audience, kindly go through the book. If you don't buy, download and read it, because my endeavor is not for money, but the knowledge goes. But if you buy, it will be good. We can good, and it can be invested in somewhere else also. So with this, I thanks you, Mukta, Yukta, and Adian editors, all the editors, Garima, Gehna, Mukta, Yukti, and all. Thanks very much. थैंक यू सो मच सर। हम आपकी बुक का लिंक जो है उसे नीचे डिस्प्ले कर रहे हैं, ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो डायरेक्टली जा सके और इस बुक को परचेज कर सके या डाउनलोड कर कर रीड कर सके। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड आपने जो इनसाइट्स हमें प्रोवाइड किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Thank you. So, वाटरशेड मैनेजमेंट पॉलिसी प्रैक्टिस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी किताब है जो रीडर्स को सिखाती है कि एक्चुअल ग्राउंड लेवल एक्शंस और टेक्निकल नॉलेज मिलके सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट लाया जा सकता है। ये बुक मैसेज देती है कि असली परिवर्तन तभी आता है जब पॉलिसी, साइंस और कम्युनिटी एफर्ट्स इंटीग्रेट हो जाते हैं। कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, पर रेजिलियंस, एडेप्टेशन और लोकल विजडम को रिस्पेक्ट करने की भी है। धन्यवाद आप सभी का इस इवेंट को ज्वाइन करने के लिए। जाइए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम वापस आते रहेंगे नए ऑथर्स की स्टोरीज लेकर। धन्यवाद।